हाँ।
Can everyone hear me? You can type in the chat if you can hear me. All right, so my name is Anoosh, and today I will be teaching you guys about framing and composition. So let me just start sharing my screen. Um, okay, so can you guys see the screen right now? Perfect. All right, so framing and composition. Let's start with framing. So basically, framing is when you picture objects and place them in the suitable background. When you create a frame inside your phone or your camera viewfinder. For example, let's just say you picked up your phone, you saw a beautiful sky, you picked up your phone, आपने phone निकाला, आपने उसके आसमान की तरफ किया. Now you have to frame it. आपने बादलों को सेंटर में रखना है, आपने आसमान नजर आ रहा हो, परिंदे हैं वो नजर आ रहे हो. It's basically capturing what you're saying. All right, so that is framing number one. The second type of framing is a frame within a frame, and this is the prime example of that one, I guess. Let me just all right, so this is the prime example of that one, where I have used to capture a frame, a picture of my friend, through a frame, which is these two metal bars. So this is basically framing. Uh, Going on to composition. Now, composition is where it gets a little bit more complicated, I guess. With composition, you have to place your subject and image in order so that the viewer can enjoy the photographs. Composition is basically like you have to combine all your subject, your objects, your background, your sky, your header, your footers together to form a beautiful image. So that is composition. There are three types of composition. There are mainly three types of composition, and I'll be teaching you guys that too, Aj. But before that, we have to go through one of the most important things in composition, which is the grid lines. So I guess all of you have like you guys have smartphones, and so unme everyone turns off their grids because they think that they are distracting or something, but actually they help you with the framing and stuff. Because in the grid, I want to share the complete screen. Okay, so in the grid, you can see that the grid is divided into like 9 equally divided boxes. Okay? You have to composite, you frame your picture within these grids if you want it to look appealing. अगर वो इनमें से कहीं भी गलत जाएगी तो it won't work. As a photographer, for a photographer mainly, it's essential for it's essential for us to place this grid in front of our eyes at all times. At start, obviously, you should put it in your. Mine is always turned on B. Oh, that's good. Okay, so for the grid, you should always turn on your grids because they are really important. But once you're a pro photographer, you should not like need grids on your viewfinder vagara. They can be distracting. You should always have a estimate of the grid lines in your eyes, but that requires like patience and practice vagara. So going on to the composition technique. Okay, so there are someone is saying okay, sorry, my bad. There are three types of composition techniques: negative space, rule of thirds, and symmetry. First of all, just tell me if you guys have any confusion abhi tak, ताकि फिर I can move on with the baki stuff. Just type in chat if you guys have any questions or any confusions. All right, so moving forward, there are three types of composition techniques. Number one is negative space. Number two is rule of thirds. Number three is symmetry. I used my photos to like show you, give examples to you guys. I guess it would be better for me to explain it, I guess so. These are three different types of composition techniques. We will be going through them one by one. So first of all, let's do negative space. Now, negative space, let me zoom in. Negative space
is basically an area where you don't have a lot of distracting stuff. You don't have your subject placement. They are in a picture. You have one positive space and one negative space on the grid. As you can see right here, that this area, the upper area, which is less distracting, it has like minimalistic background. It has smooth, silky clouds. It's called the negative space. Negative space photography is mainly used for minimal artists. They use it most mainly because they want to focus, drive attention to the main subject and not the alag uh, things around it. So if you can see that positive space is the space where our main subject is placed. Now, if you look at this image, यहाँ पे the house is placed, फैमिली मेंबर इस ग्रिड में है, मतलब नीचे वाले लोअर हाफ में आपका सब्जेक्ट इज प्लेस, ऑलराइट. ऊपर वाले में नेगेटिव स्पेस में इट्स लाइक रियली वाइड एरिया और उधर कुछ भी नहीं, सिर्फ बादल हैं. That is used to create a depth of field, and it's used, negative space is mainly used to create a sense of emotion of how big the world, and like just to give an example, like how big the world and how small your problems are. This kind of concept is clear. So as you can see, यहाँ पे दरख्त हैं वो मिडिल रेंज में आ रहे हैं ग्रिड लाइन के. दैट इज बिकॉज द मिड रेंज इन नेगेटिव स्पेस इट आल्सो कम्स बिटवीन नेगेटिव स्पेस. लेकिन वहां से आपके व्यूअर की अटेंशन बनती है. आप ऊपर से देख रहे हैं, बादल हैं, ठीक है, गुड इनफ, तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है. आपने नीचे देखा दरख्त की टॉप है, नीचे आपका मेन सब्जेक्ट है. बट अगर आप इमेज को यकदम देखेंगे तो आपकी नजर फौरन घर पे जाएगी. दैट इज वेयर लाइक द नेगेटिव स्पेस एंड पॉजिटिव स्पेस कम्स इन हैंडी. Someone asked a question. Okay, fair. Moving on to the next one, symmetry. So, excuse me. Acha, theek hai. So symmetry is basically when you place your subject in the center of the grid line. One half of the picture is like perfectly symmetrical. It's perfectly framed. It's really good composited. And the other side of the frame, it just it mirrors itself to look symmetrical. Is the positive space always supposed to be at the bottom? Yes, the positive space is always supposed to be at the bottom. That's just how it is. Because when a viewer sees a photo, उनकी नजर डायरेक्ट नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, because the main subject is always on the bottom. Can everyone hear me? किसी को मसला तो नहीं आ रहा? ठीक है, Hira, you have some problem with your mic, I guess. Acha, so symmetry, yeah. So you can see this image. Let's take this image for example. If one was to draw a line between this picture, like in the center of this picture, all of the objects would come in place. All of the lines, if you can see, yahan se, it's all aligned. It's symmetrical. And the thing about symmetry is that it appeals to human beings so much because it looks like really appealing that they always go. I myself go for symmetry the most. Symmetry honi chahiye pictures mein. Symmetry is really important because if the symmetry is not good, then what good is your photo? अगर आपका सब्जेक्ट का और आपका जो सब्जेक्ट है वो सेंटर में प्लेस्ड ही नहीं है, इर्द गिर्द की चीज़ ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, तो आपकी नज़र आपके जो आप कैप्चर करना चाह रहे हैं उस पर कभी जाएगी नहीं. That's just how it is. Symmetry is disregarded by a lot of people for some reason. I don't know why. I never disregard it. It should never be disregarded because the symmetry is what makes a picture beautiful. So I hope you guys are understanding this too. I will get back to these later. The third composition technique is rule of thirds. So now this is like the most famous one, and this is the most complicated one too, in a way. As you can see, rule of thirds is basically used. It is used by combining with negative space and symmetry. All of these three things, they go in hand to composite a photo. So as you can see here, our subject is placed on the right side of the center blocks, ठीक है? और यहाँ पे इतना area खाली है. If I was to like look at symmetry सिर्फ, तो I would have placed this character in center, image के center में, सारा focus इस पर, but I didn't want that. See, the purpose of rule of thirds is कि आपने ग्रिड में अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस करना है कि जो बैकग्राउंड है, जैसे एरिया, इसका इंटरेक्शन आपके मेन कैरेक्टर के साथ हो रहा. रूल ऑफ थर्ड आपको एक पर्सपेक्टिव देता है, मतलब आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप उस तस्वीर में, आप उस जगह पे हैं, आप इंटरैक्ट कर रहे हैं.
अगर आप वीडियोस में देखें तो रूल ऑफ थर्ड इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में, बंदे की शोल्डर साइड दिखा रहे होते हैं, साइड पे इतना ब्लैंक एरिया होता है, दैट इज फॉर यू टू इंटरैक्ट विद द बैकग्राउंड टू. The rule of thirds is what makes the picture interactive and a bit more attractive. और ये दोनों फॉर्मेट्स में यूज होती है. इधर भी अगर आप देख लें, द कार इज प्लेस्ड इन द सेंटर, लेकिन आधी वो लेफ्ट हाफ में, द सन इज इन द सेंटर बिल्कुल, लेकिन राइट पे इतनी सारी स्पेस खुली छोड़ी हुई, एंड दैट इज फॉर द ऑब्जेक्ट, द सब्जेक्ट टू इंटरैक्ट विद द बैकग्राउंड एंड फॉर द व्यूअर्स टू गेट अ visible like view of what's going on, I guess. So these are the main three composition techniques. Now all three of these should go in hand in order to create a good photo. अगर इनमें से एक भी चीज मिस है वो काम खराब होगा. Let's just say कि इस पिक्चर में आपने रूल ऑफ थर्ड्स तो अप्लाई कर दिया, लेकिन जो बोट है, ये बंदा है, ये हल्का सा टिल्टेड है, सिमेट्री नहीं है उसमें. That would ruin a picture. Not using any one of these techniques साथ साथ can mess things up. But if you overuse them by overthinking them, ज़्यादा सोच कि यार नहीं सिमेट्री बिल्कुल ही होनी चाहिए, रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो नहीं हो रहा, you can ruin a picture too. So don't overthink while taking a picture. Grids on रखें, उसमें देखें, अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली फ्रेम करें, बैकग्राउंड के साथ अलाइन करें ताकि वो एक अच्छी अपीलिंग इमेज बने, बिकॉज दैट इज द पर्पस ऑफ इमेज. इमेज टेल्स अ स्टोरी, और अगर इमेज विजुअली अपीलिंग है ही नहीं तो हाउ विल इट कन्वे योर स्टोरी थ्रू इट. सो these were the three composition techniques, the three main composition techniques in photography. Before I get to the like part where I asked you guys stuff, if you guys have any questions, ask away. I will open the chat. So. All right, so you don't have any questions. Anyone else? Do you guys are you guys confused about anything else, or you guys want to ask about something? Push lo, ताकि I can get to the last part. I guess how do you turn on the grid? हर फोन में एक अलग ऑप्शन होता है, कैमरे में ऑटोमेटिक होती है. यू हैव टू गो टू द सेटिंग्स, कॉर्नर में होता है कैमरे ऐप के अंदर, वहाँ पर जाके यू हैव टू टर्न ऑन द ग्रिड्स. इट्स रियली इजी एंड यू शुड ऑलवेज टर्न ऑन द ग्रिड. Any other questions related composition techniques वगैरह? Okay, so I'm guessing no one has any other questions, so I should continue. Yansir. So this is the part where you guys have to answer the questions for me. I will be showing you guys a series of photographs, and you guys have to tell me in my कौन सी composition techniques use हुई हैं, and then we can discuss them later on. The first picture is this one. So I want all of you to tell me in the chat box कि यहाँ पे कौन सी यूज हुई हुई है. गौर से देखें, सारी फ्रेमिंग को देखें. हो सकता है कि मैंने यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉम्पोजिशन टेक्निक्स इस्तेमाल की हुई है. Before typing symmetry, keep this in mind that I can and I have used multiple techniques here. Fatma says all three. Negative space. All right. Negative space. सबने जवाब देना है. कुछ क्या है यहाँ पे? I need answers from everyone. Okay, negative space and symmetry. Most of you guys are saying negative space and symmetry. Okay, so
और लोग अभी टेक्स्ट नहीं कर रहे. I don't think we have much time to wait for them. अच्छा, so इसमें I have used symmetry, but I haven't used negative space because I mentioned earlier कि negative space जो है उस एरिया में डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स नहीं होते. नेगेटिव स्पेस या तो एक प्लेन मिनिमल स्काई होता है, हल्के से क्लाउड्स होते हैं, दरख्त वगैरह हो जाते हैं, पत्ते वगैरह हो जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्टिंग स्टफ उसमें नहीं होता. एज यू कैन सी हियर, इधर काफी सारा डिस्ट्रैक्टिंग स्टफ है उसके हेडर में. मैंने ऊपर खाली एरिया छोड़ा, दैट डजंट मीन दैट इट्स द नेगेटिव स्पेस. वो पिक्चर को एक पूरी शेप दे रहा है. इट्स जस्ट सिमेट्री हियर, इट्स जस्ट सिमेट्री. आई डिडंट इवन यूज रूल ऑफ थर्ड्स. नेगेटिव स्पेस तब होती है, आप तब नेगेटिव स्पेस आप तब कह सकते हैं जब आपकी इमेज में ऊपर डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स ना हो. अगर आप देखें यहाँ पे आपके सब्जेक्ट से ज्यादा ऊपर वाले एलिमेंट्स ज्यादा अट्रैक्ट करे बंदे को, दिस इज नॉट नेगेटिव स्पेस, दिस इज जस्ट सिमेट्री. सो दिस इज हाउ दिस वन इज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर, दिस वन. कैन यू गाइस टेल मी यहाँ पे कौन सी टेक्निक्स यूज हुई हैं? नो, पॉजिटिव स्पेस गोज अलोंग विद नेगेटिव स्पेस, वो अलग से एक चीज नहीं है. It goes together with negative space. वो एक पैकेज में आता है. All right, rule of thirds negative space. Yes, you guys are right. This one did use. I used rule of thirds and negative space. यहाँ पे मैंने इसको third right corner में place किया हुआ है. Negative space is to create that atmosphere. खुला आसमान, no distracting elements. Subjective focus. You guys are right about that. Moving on to a bit complicated ones now. Okay, so these are 3 different photographs. Okay. Can symmetry and rule of thirds possibly be used together in one picture? Yes. Yes, they can be. Fiza. Acha, so now these are 3 different pictures. इन पिक्चर्स का बारी बारी करके बताना है. पहले पिक्चर नंबर 1 का पता है, दिस वन का, कि यहाँ पे कौन सी यूज हुई है कंपोजिशन टेक्निक. नेगेटिव स्पेस. अच्छा, नेगेटिव स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस, सिमेट्री नेगेटिव प्लस 1. ऑलराइट, बाकी सब बीच में सिमेट्री. That's an interesting one, rule of thirds and negative space. Okay, so I used all 3 of these techniques. अभी बाकी second और third पे जाते हैं. I used all 3 of these techniques in the first one. If you can see here, this area is the negative space. It's not distracting at all. यहाँ से नीचे इतना एरिया जो है ये पॉजिटिव स्पेस का है सारा. ठीक है. पॉजिटिव स्पेस में I have used symmetry. I have aligned this, a friend of mine, to the trees in the center of the image. ठीक है ना. But I wanted to show the opposite side of the dinosaur too. So I used rule of thirds वहाँ पे. I placed the dinosaur in the left lower half of the grid, and I placed the main character, my subject, on the right in the center area of the grid. इस तरह I combined all 3 of them to create a powerful image, like the boy meets the world kind of image. So I used all 3 of them here. Now moving on to the second one. Second one, मैं बताएं कौन सी यूज हुई है टेक्निक्स. This one. I'm talking about this one now. अच्छा, rule of thirds, rule of thirds. Symmetry in third, all right.
सेकंड थर्ड, बाकी जो आप लोग टाइप करते जाएं साथ साथ मैं पढ़ रहा हूँ. Thirds. ठीक है. Yes, I will. लेकिन मैं सबके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ. I will explain how rule of thirds is used here. One, yes, asymmetry. अच्छा, I guess this is it. मैं इस पे आपको समझाता हूँ. Let me bring on the grid here, I guess. Actually, no, this won't work. So, अच्छा. Khair, so yeah, I actually used rule of thirds इसमें, because the thing with symmetry is कि जब मैं symmetry आप use करते हैं तो आपके subject के center में एक attention draw हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे main subject वो center वाला figure नहीं है. यहाँ पे main subject हमारी ये side वाले characters हैं, ठीक है? ये बच्चे जो हैं, like the guy is just symbol of hope, ठीक है? वो हमारा main subject है. और अगर आप उनको grid के हिसाब से देखें तो यहाँ पे और यहाँ पे लेफ्ट एरिया में मेरा सब्जेक्ट प्लेस्ड है, राइट एरिया में सब्जेक्ट प्लेस्ड है, सेंटर में जो बंदा है वो एक उनको इकट्ठे जोड़ है. द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ द फोटोग्राफ्स ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द ग्रिड. दैट इज हाउ आई यूज्ड रूल ऑफ थर्ड्स. इसमें सिमेट्री तब होती है कि मेरा सब्जेक्ट में सेंटर में प्लेस करा होता है. मेरा सब्जेक्ट जो सेंटर में बंदा है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इट्स द पीपल ऑन द साइड. तो दिस इज हाउ आई यूज्ड रूल ऑफ थर्ड्स इसमें. अच्छा, now coming on to the third picture, this one, इसमें third symmetry and negative space, all right. और symmetry, ठीक है. ठीक है. Just as negative space, symmetry. अच्छा, ठीक है. So I use symmetry and negative space hand in hand in this picture. Negative space वाला एरिया जारी बात है ऊपर है, सेंटर में पॉजिटिव स्पेस है मेरा सब्जेक्ट का, और यहाँ पे नीचे पानी का एरिया जो है ये. एंड सिमेट्री बिकॉज ऑब्वियसली इट इज in the subject in the center, subject is in the center of the picture. I could have used rule of thirds यहाँ पे too, लेकिन I didn't. अगर मैं rule of thirds यहाँ पे यूज करता तो मैं पिक्चर जरा ऊपर से लेता, जो माउंटेन्स हैं ये वाले, ये horizon level पे आते हैं, लेकिन वो पे डिस्ट्रैक्ट कर देता आपको मेन सब्जेक्ट से. दिस इज द थिंग, आपको प्रैक्टिस के साथ आता है कि व्हेन यू हैव टू यूज व्हाट रूल, क्योंकि समटाइम्स ज़्यादा रूल यूज करके आप ज़्यादा टेक्निक्स यूज करके पिक्चर को ज़रा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड, आई गेस. हाउ इज इट नेगेटिव? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको. ये वाला एरिया अगर आप देखें यहाँ पे, सो अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट रूल ऑफ थर्ड्स. इट इज कॉम्प्लिकेटेड, मैं अभी आपको समझाता हूँ उसके बारे में. We have time for that. I mean, how is it negative? अच्छा, मैं बताता हूँ. ये जो ब्लैंक एरिया, जिस एरिया में डिस्ट्रैक्शंस ना हो और वो आपके पिक्चर के ऊपर हो, आपके सब्जेक्ट के ऊपर वाला एरिया जो उसमें डिस्ट्रैक्शंस अगर ना हो, इट इज कॉल्ड नेगेटिव स्पेस. मतलब यू लुकिंग इन द एंटायर पिक्चर, आपने स्काई को थोड़ी देर के लिए देखा कि इट्स लाइक अ ह्यूज स्काई, बट यू आर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट, द सब्जेक्ट, द बोट सेंटर में जाके, वो पिक्चर के सेंटर में आ रहा है, ठीक है. No. Positive space isn't supposed to be at the bottom. ऊपर नेगेटिव स्पेस होती है, जहां से नेगेटिव स्पेस खत्म होती है ना, वहां से पॉजिटिव स्पेस शुरू हो जाती है. दैट्स थिंग. मतलब मैं दिखाता हूँ. यहां तक, इस एरिया तक हमारी नेगेटिव स्पेस थी, इधर से नीचे तक हमारी पॉजिटिव स्पेस आ गई, ठीक है.
यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लेस्ड है पॉजिटिव स्पेस के सेंटर में, क्योंकि हमें उसकी तरफ अटेंशन ड्रॉ करनी है, और ऊपर वाला एरिया सारा नेगेटिव स्पेस है। जहाँ भी कोई डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट आपके सब्जेक्ट के ऊपर ना हो, वो नेगेटिव स्पेस होती है जगह, बिकॉज नेगेटिव स्पेस फोटोग्राफी इज यूज फॉर मिनिमलिज्म, ठीक है ना। मिनिमलिज्म में क्या होता है, आप सबसे कम चीज़ अपनी पिक्चर्स में ऐड कर रहे होते हो। जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर, यहाँ पे सिर्फ एक बोट है और पानी है, लिटरली इट्स रियली सिंपल, इट्स रियली मिनिमलिस्टिक। दिस इज द पर्पज ऑफ नेगेटिव स्पेस फोटोग्राफी। आई होप को समझ आ गया आप लोगों को नेगेटिव स्पेस। अगर आ गया तो मुझे बता देता, क्या आई कैन मूव ऑन नेगेटिव स्पेस से। यस आतिका, कुछ को मैंने थोड़ा समझाना है। अगर मैंने स्काई की पिक्चर लेनी है, which technique should I apply? You should use rule of thirds हमेशा, स्काई खाली स्काई की पिक्चर लेते हुए ऑलवेज यूज रूल ऑफ थर्ड्स, अनलेस स्काई में कोई एक स्पेसिफिक क्लाउड है जिसको आपने फोकस करना है, देन यूज सिमेट्री। और अगर आपने नीचे बैकग्राउंड भी कैप्चर करना है, नीचे वाला एरिया, लोअर हिस्सा, तब यूज नेगेटिव स्पेस, वरना ऑलवेज गो फॉर रूल ऑफ थर्ड्स। वानिया सेज यस। किसको कंफ्यूजन थी इसके बारे में, रूल थर्ड्स के बारे में? लेट मी सी। Fatma, yeah, Fatma, are you clear about it now? Negative space. All right, ठीक है. Let's move on to the last picture. Here I will answer Atika's question. These two pictures. Picture number 1 जो है, उसमें what technique did I use? What techniques or did I use to capture the picture? This one. All three. Ramin says all three. Acha. First rule of third and symmetry. Negative space and rule of thirds. All right. Alright, अच्छा, मैं अब समझाता हूँ आपको। Either I didn't use negative space. This is where you guys need to be clear about this concept. अगर यहाँ पे देखिए ऊपर वाले एरिया में कितनी कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रैक्टिंग चीजें हैं, ठीक है ना। दरख्त ही दरख्त है, पत्ते ही पत्ते हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, आसमान कम नजर आ रहा है, दरख्त ज्यादा नजर आ रहे हैं, दैट इज नॉट नेगेटिव स्पेस। ओके, दैट इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। नीचे आपका जो सब्जेक्ट है वो छोटा सा है और डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स ज्यादा हैं। यहाँ पे आई यूज रूल ऑफ थर्ड्स एंड सिमेट्री। रूल ऑफ थर्ड्स में आप मेनली सिमेट्री रूल ऑफ थर्ड्स तब मिला के यूज करते हो जब आपने अपने सब्जेक्ट पे भी, मेन सब्जेक्ट पे भी फोकस डालना होता है और आपने अपने बैकग्राउंड पे भी डालना होता है। लाइक आई वांटेड टू शो मेरा सब्जेक्ट सिटिंग, बट आई आल्सो वांटेड टू शो द ब्यूटीफुल ट्रीज और नीचे पानी वगैरह, व्हिच इज व्हाई आई यूज्ड रूल ऑफ थर्ड्स एंड सिमेट्री हैंड इन हैंड, इसके साथ साथ। नाउ रूल ऑफ थर्ड्स इजंट वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिमेट्री, दोनों साथ साथ जाती है, समझ लो जुड़वा भाई की तरह के हैं, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। So I use rule of thirds and symmetry. Can you explain इसमें symmetry कैसे है? ये देखें, जो बेंच है, बेंच बिल्कुल सेंटर में, फ्रेम के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। इधर से अगर आप, मैं I don't think I have image of the grid, मेरे पास होती, मैं आपको डाल के दिखा देता ग्रिड इधर यहाँ पे। ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये अगर आप ऐसे इमेजिनरी ड्रॉ कर लें लाइंस इधर, ठीक है, इट्स इन द सेंटर, ठीक है। रूल ऑफ थर्ड्स मैंने कैसे यूज किया, वो सब्जेक्ट हमारा सेंटर में, लेकिन ये बैकग्राउंड पर स्लाइड देख लें, ये हल्की सी राइट की तरफ है, ठीक है। आप ट्रीज वगैरह देख लें, दे आर इन ब्लर, ठीक है ना, वो पूरे फ्रेम में आ रहे हैं। वो ऊपर वाले जो राइट वाला येलो वाला हिस्सा ट्री का, वो आपके राइट हिस्से में आ रहा है, ग्रिड के जो पिंक वाला है वो लेफ्ट में आ रहा है, और पानी नीचे लोअर हिस्से में आ रहा है, सारा फ्रेम पूरा नजर आ रहा है। एंड दैट इज हाउ रूल ऑफ थर्ड्स गोज विद लाइक सिमेट्री, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर नाउ। द सेकंड पिक्चर, इसमें कौन सी टेक्निक्स? सेकंड में सिमेट्री, ऑलराइट, एंड बाकी सब सिमेट्री, सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री।
Symmetry will find the trees. Acha. Symmetry. All right. So yes, it is symmetry. I'm sorry. Acha. ठीक है. Acha. So it is symmetry, and you guys are right about that. Trees, मैं बताता हूँ आपको. Trees एक proper solid object है, ठीक है. It's a proper subject, ठीक है. लोग इसकी pictures लेते हैं, and it is distracting because trees consist of multiple elements, ठीक है. जो भी चीज multiple elements की कंसिस्ट करती है इस पे नजर आती है, लेकिन हर बंदे का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है. आई गेट दैट कि आपको डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लग रहा, लेकिन एक नॉर्मल व्यूअर को वैसे जाते हुए फीचर स्क्रॉल करते हुए ट्रीज डिस्ट्रैक्टिंग हो सकते हैं. अक्सर शैडोज भी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकते हैं, सो यू हैव टू प्ले विद एवरीथिंग ना सही से. आई डेफिनेटली यूज सिमेट्री इन दिस एंड यू गाइस आर राइट अबाउट दैट. अब इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस वगैरह तो पूछ लें. द सेशन इज कमिंग टू एन एंड, आई गेस. आस्क द क्वेश्चंस जो भी पूछने आप लोगों ने. Yes, yes, sure. You guys can unmute and ask. Hi. Okay. So, for rule of third and symmetry, when you use it together, so is it like you have to have like two subjects, and then like आधा जैसे like is it based on two subjects? Like does it like? No, it isn't based on two subjects. Symmetry and rule of thirds are used together जब you want to show your subject and your background इकट्ठे. अक्सर होता है ना फोटोग्राफ्स में people prefer showing their subject सिर्फ उस पर फोकस है, बैकग्राउंड इतना साफ मतलब नजर ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. रूल ऑफ थर्ड्स और सिमेट्री तब यूज होती है जब आपने अपना सिंगुलर सब्जेक्ट, बेशक सब एक से ज्यादा भी हो आपका मेन सब्जेक्ट, इट डजंट मैटर. यू कैन ओनली यूज इट तब जब आपने अपना बैकग्राउंड और सब्जेक्ट इकट्ठे दिखाना हो. मतलब फॉर एग्जांपल इफ इन दिस फोटोग्राफ मैंने सिर्फ अपने स्क्रिप्टर को शो करना होता ना मेन बंदे को, मैं पिक्चर को क्रॉप करता, मैं हल्के से नीचे से लेता, अब मैंने हल्के से इस तरह ऊपर एंगल से लिए, मैं हल्के से ऐसे करके लेता कैमरे से, तो ऊपर वाला हिस्सा नजर ना आता, सब्जेक्टिव फोकस आता. या मैं उसको दूसरे एंगल से लेता जिसमें सिर्फ बंदा खड़ा नजर आ रहा, बैठा नजर आ रहा है. तो आई वांटेड टू शोकेस माय बैकग्राउंड एंड माय सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई आई यूज ना these two साथ. अच्छा, so if you take the bigger picture, जैसे if you take a bigger picture, that means कि you're using rule of third also. Yes, yes. When you are taking a picture जिसमें आपका बैकग्राउंड और सब्जेक्ट दोनों क्लियर है, तब आप रूल ऑफ थर्ड्स भी यूज कर रहे हैं उसमें. एंड लाइक ऑलवेज टर्न ऑन द ग्रिड व्हाइल टेकिंग अ पिक्चर. वो बहुत हेल्प करता है, क्या उसमें आप अपने आप को अपने सब्जेक्ट को फ्रेम कर रहे होते हैं आराम से. आप देख रहे होते हैं इस एरिया में ये आ रहा है, इस एरिया में ये आ रहा है, सेंटर में हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, तो इट्स बेसिकली परफेक्ट. Okay, thank you. किसी और के सवाल हैं? जो भी सवाल हैं यू कैन आस्क. पिक्चर. थैंक यू, थैंक यू. हाँ, थैंक यू. और कोई क्वेश्चंस सिमेट्री वगैरह से रिलेटेड, कॉम्पोजिशन से, फ्रेमिंग से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, आई कैन गो बैक टू आप लोगों ने अगर कुछ भी पूछना है तो. Because like this is सबसे important part of photography and you guys will have to use these in your assignments. So हम आपको देंगे या आगे अपनी photography careers में, तो कोई भी questions हैं you guys can clear it out अभी मेरे से. Very good. To all, yeah. Actually, there are 5 to 6 composition techniques, लेकिन वो और ज़्यादा complicated हैं. तो mainly सारे professional photographers use these 3 techniques, और बाकी techniques हैं वो इन्हीं से निकली हुई हैं. वो लीडिंग लाइंस हैं, कुछ सर्कुलर सिमेट्री टेक्निक्स हैं, लेकिन मेन 3 जो बेस हैं वो यही हैं. इनसे आगे ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन मेन प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स यूज दीज 3 टेक्निक्स. Do we have any other questions? Or should, but if you don't like the camera of your phone that much,
The photos you take. You can always edit them. That's what I do. I have a Nikon D3300. It's like the most basic camera one can get. उसके साथ मेरे पास kit lens है, हल्का सा damaged. It's not a fancy lens. ये सारी pictures जो हैं वो मेरे 2012 में लिए हुए kit lens के साथ Nikon D3300 की हैं. I don't have a good camera. I still don't. तो मैं सारी उससे लेता हूँ. You can always edit them. अगर आप उनको framing उनकी सही करके composition अच्छी बना के ले रहे हैं ना, कैमरा बेशक खराब है आपके फ़ोन का, वो अच्छी लगेंगी if you're compositing them well. फिर once you edit them, they will turn out really good, really good. मेरे दोनों फ़ोन से कैमरे aren't that good, लेकिन मैं उनको compose ऐसे करता हूँ, फिर बाद में मैं उनको process ऐसे करता हूँ editing में कि they turn out to be really good. So if you guys ever want, I can show you guys example of phone photography too in the class. Will you be teaching us to? Yes, I will be teaching you guys how to edit pictures on Lightroom and Photoshop. For phone, your mentor will be Zenia Mehdi. First two slides. Yes, I can. Okay, sir. Are you talking about these two? Yeah, this is the one framing slide. Okay. This is an example of frame within a frame. Okay, and this is an example of a simple frame. And this one is about the composition, how you can place your subject in center while making sure that everything else is in the frame too and is visible. Okay, no problem. All quick questions here? No, thank you. Okay, all right. So I think we should end the class here. I guess the time is up. So thank you so much, guys, for joining the class. I will see you in the next one, I guess. Thank you. Bye. How do I end this class?